Okay, so hello everyone, welcome and welcome back to the PrepBee. In today's GD, we have a participant. I can name some of them that are Gautam, Mahek, Ruhin, Shubham, Harshil, Avinash, Shankar, Abhijit. And this is going to be an unstructured GD. The rule is very simple. You have 2 minutes to think once I give you a topic. Please note down the rule if you wish. You have 2 minutes to think. Then you have 8 minutes to discuss the jury topic. Please note, you have only 8 minutes to discuss the jury topic. And then any one of you come up and conclude the GD. For the same, you have 1 more minute. I hope the rule is clear to all of you. Anyone have any questions? No, sir. If yes, let me know. I can repeat, you guys have 2 minutes to think on a topic, 8 minutes to discuss the topic, and 1 minute to conclude the topic. Please be mindful of the timing. If Sir, you, sir, it means it's 11 minutes GD. it is an 8 minute GD. No, I'm talking about overall activity. Oral Two, activity. 8 and 1, na? Is like 2 minutes to think, 8 minutes to discuss and 9 minutes 1 minute total for. GD timing. 9 minutes you have total timing for GD where you have to 8 minutes discuss the topic and 1 minute to conclude the topic. I Okay. hope it is clear. So I'm not going to ask or write anywhere to please conclude. So be mindful of the timing. Your topic is, should the rich and wealthy in India be taxed more? Should the rich and wealthy in India be taxed more? And your time will start now. Hello everyone, my name is Avinash Das and I am glad to start the GD. Um, in this topic, I feel that according to me, the rich should not be taxed more because higher taxes may discourage investment and entrepreneurship. And also, wealth creators may feel penalized for success. And as a result, the risk taking and innovation could reduce, and this may slowly um, reduce the economic growth. And also, the job sector would be affected. If there is no entrepreneurship, there will be less companies as well as the job creation could be affected. Yeah, so we are here to discuss why should the rich in India be taxed or not. So first of all, we need to stay focused, or first of all, we need to look at the fact that 60% of total India's wealth is accumulated by only the top 10%. In a population of 1.4 billion people, only top 10% people are having 60% of the wealth. So obviously, we will think that, yeah, we should tax more, but we should look at the tax slabs first. They are already getting taxed high. Anyone earning more than a fixed threshold, they are earning high. So are they really paying taxes? Let me tell you, they are not, because not because they are doing this illegally, because they have found loopholes in the project. There are loopholes there. They can either own a forest organization, an NGO, so that they can evade the taxes. So first, I think we should discuss not if we have to tax them more. I think we should discuss what are the loopholes in the topic, what are the loopholes in the system that we need to evade, and how can we address them.
so that all the top 10% can get the wealth that the bottom 90% are deserving. Yes, I'm And agree also with add, you. I So want I to would add like to agree some with points. Gautam and disagree with Abhinash because although incomes are different, and as Gautam stated that many part of the Indian wealth or any country's wealth, right now in India, if we take example of that, a very major portion of wealth is accumulated to 1% to 1.5% of the people. But Avinash stated that a country cannot grow if we tax more. But I would like to disagree because that money can be used for public welfare and like public transport or building colleges, schools. And not only this, it will not at all kill competition because a fixed amount of taxation should be there, which should be very appropriate. Although more or less it can change through time, but there should be a certain criteria to tax. For example, different sectors should be taxed as differently, and for example, education sectors can be taxed a little bit lower, and sectors like which are very booming in nature. You can take example as IT sector or infrastructure. They can be I'm agree taxed with a Shubham. little more so that I want to add some points here. Shubham says, a or stable tax is very important. I think yes, fixed and predictable tax structure, like it helps to create individual. It's business rich individual and business rich, and when tax rates keep if is increasing, then it creates fear and instability among some investors. And it also if tax slabs are there, it will beneficial for middle class family members to like put their family planning or their financial planning, etc. Stability in taxation, it will encourage that, I think, voluntary tax compliances, and I think instead of increasing tax rates, government should there expand the tax base. Like it will not create any uh, like we can say rampus or like mixing in other ways, I think. yeah, I so think adding on that, I would say the rich, they are being taxed, agree, but the proportion of their income that is being taxed, when a working professional is earning 1 crore, then the ratio of that income is being taxed is far more than the rich is being taxed on their income. So it doesn't seem fair for the working professional and the for the rich classes. So there should be some criteria so that the proportion of their income should be taxed, not there should be slab above which this much tax is applicable. Instead of that, there should be some proportion that this much proportion of the income will be taxed and will have to be paid in taxes. Yeah, Yes, I think we can all that's what would agree on. address the topic really, really well. Because as we know that yes, there is a proportion. They are earning way above. Let's say because of Yeah. course there are billionaire families and there are very, very rich families. And most of the time, and even many of the times, they even spend their earnings outside of the country just to avoid taxes. So yes, there should be a proportion. There should be a certain threshold that should be taxed differently. And I think, well, while billionaires might not agree, but we all know that billionaires are just people. Like they are not gonna spend their entire net worth in this lifetime. Even their generations can spend. So above a threshold, like even maybe 500,000 crore or maybe even 500 crores, they should introduce a new tax slab. They should new system so that they can be taxed thoroughly and the money can be utilized further. Yes, I I think agree to the we all points which agree has and that been yes, mentioned the till now. current But uh, I want to say that there should not be an unequal taxation system. Like I agree when it is said that people should be taxed according to their incomes. But I am saying that there should not be any inequality between the persons who earn high or between the persons who earn low. Because if we do right. this, and excessive taxation can lead to like the investors leaving out from India, and this will result investors to invest more money in the low tax countries. I Yeah, think the I I'm problem totally agree not with agree with But his, there is you. a but problem with I think Avinash's point that
If he is saying that it will discourage investors and a country cannot grow, let me take an example of a country, Luxembourg. It is considered a quite wealthy country, and their tax slab is different for a certain number of people who have different types of levels of incomes. And they use that money for different purposes, such as public universities, free transport, and etc. So, in case of investors being discouraged, I don't think that will create a very important because the number of wealth they will be earning if a country is booming, the number of wealth, for example, we take 10 crores invested. Even if let's say the investor makes 5 times, and he or she has to pay 8 crores of taxes. But if the same amount is invested in a developed country, he may not make 5 times. So if at all we tax them, and they will have to invest because the ratio is very different from a developed country to a developing nation. So if we take example of Adding India, to Shubham point, I want to put some hello. point on like advantages of I think tax slab. I think it I will be think the very time is over. The 8 minutes are over, and I try to give a concluding statement. okay. Yeah, I yeah. think we can all agree on the fact that we need a proper taxation system first, rather than increasing the taxes that are already there. Okay, there are a lot of loopholes in our current taxation system that billionaires or maybe middle class man exploits in order to not pay their taxes. So I think there is a bigger need to optimize our current taxation system. Like like someone said, they use the agriculture income or the share income that they show as and realize. So they are not bound to pay taxes on that. So I think there needs to be some policy in order to regulate all this uncertainty and ambiguity. So that there is a more optimized taxation system. Hello everyone, myself Mike. So I am a student. I am not an not an I cleared CAT or I did given CAT. I'm a student now, still preparing for CAT. So I randomly joined this meeting. My insights or my opinion about this topic is that should wealthy or rich people have to be taxed? So the main point is here the central body which the government is operating these businesses like their taxation of wealthy people. So it should be taxed hierarchically, like dividing different levels. Like if a business is selling is business like product to other business like B2B business, so they have to be taxed more. And because why? Why? Because in a D2C business, like if a business is selling the product to a customer, it is making more amount of employment and other public welfare, public welfare programs. So it should be taxed less. So should be taxed proportionately. So it should be taxed like a creamy, non-creamy, like we have in caste system like creamy, non-creamy, and other layers. It should be taxed based on their income levels and what they are giving to the public. So if they are more towards like when we assume 2% of what a business earns should be given to a public welfare like C to CSC funds, like common social funds, it should be given. So what a company is more focusing on public welfare, it should be taxed less. And what a company which is focusing on more employment, more public giving, and more giving, more encouraging the public and to give entrepreneurship. So one companies like edtech companies or education companies who are encouraging entrepreneurship, encouraging education, which they should be taxed less. And one goes with the commercial like commercial businesses like B2B businesses, they should be taxed more. So this one. You're not audible, Mehak. Thank you. And I think we are out of time. Yes, I So think Yeah, I time is think the over. time has been I finished. think it was a 2-3 minute conclusion. Yes. Okay. So how's the GD topic, first of all?
It Three was topics quite were familiar, covered. sir. It was a very, yeah, it was a familiar topic. So it was familiar, but it's thrown out of the blue actually yes, for like me. points were. Mm. Mhm. Like points were there in the mind, but they were just randomly scattered. Okay. So although the topic is easy and known to each of you, but still I can see some of you are not able to speak, right? Harshil, Ifa, and I guess yeah, you are the two people. Even Mehak, he has a very good point, but he started speaking once the conclusion end. So although the point he is like adding, you guys not discussed all those pointers. He's talking about all the policies and everything. Although you have mentioned about the like someone of you has mentioned how they save their tax about the companies, right? Yeah, you have found a loopholes. This is what something you have mentioned, but you haven't elaborated. So the Mehak, whatever point you have just added, these are the pointers which you could continue after Gautam. And once the GD Yes, end, sir. you have to you don't have to add any pointers. Hope it makes sense. So Uh, let's start with our first hygiene check, which is very very important, very necessary. And whenever I took a GD, this is what something I start with. Whenever you're going to take a GD, a mock GD or your actual GD, you have to have a proper sitting. Like I can see Mehak is still somewhere, he's traveling, whatever reason. So if you're sorry. participating anywhere, make sure to have a proper setting, right? You should sit one's place, although you're joining from mobile and anything else. You should keep your cameras stick, okay, so that others can't distract with this. If it is offline, it is okay, but right now it is online, so you have to follow some kind of rules. In your actual GD Okay. also, you have to be calm and composer. I can see some of you who wants like started with something nervousness. Who are the people? Nervous people. I can see one or two of you are nervous when you are speaking. So yeah, that will become or I would say overcome by the time, right? So yeah, let's start with the feedback part. This is one something which you have to make sure. Second, I like the point from you guys. You didn't jumped in between and you haven't crossed when someone is adding their points. It was happened one or two twice. I remember Abhijit was mentioning something, and then at the end, Karan who jumped and said, "Oh, Abhijit, you just have to wait because we are done with the timer. So let me conclude." Let him finish. Let him finish. Although if you wish to take a lead to conclude and time is running out, you should simply jump in between of a timer where he's taking a pause, right? And as I told you guys, be mindful. I will let you know about one of the incident when I was sitting with the IIT Kanpur interview, and that time they conducted GD offline. People are not able to conclude because they are like they're fighting with each other. ऐसा लग रहा था वो क्या नाम है भाई, न्यूज़ Debate, चैनल debate, पे रहता ना, वैसा कुछ चल रहा था। debate. यस, नहीं वो एक अच्छा Republic नाम याद TV. है मुझे, but नाम मैं ले नहीं सकता हूँ, आई कांट नेम ये बिकॉज ऑफ रीजन कुछ हो जाए ना, तो वैसा चल रहा था हमारा फाइटिंग। सो यू हैव टू बी वेरी माइंडफुल, यू हैव टू बी वेरी काम एंड कंपोजर एंड हैपेंड इज उसमें से कोई सिलेक्ट नहीं हुआ। इवन आई गॉट रिजेक्टेड बिकॉज ऑफ दोज ऑल थिंग। तो बहुत कुछ होता है, बहुत जीडी में आपको ऐसा नहीं कि सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड करेगा, इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन ओवरऑल हाउ मेनी ऑफ यू आर परफॉर्मिंग, हाउ यू आर परफॉर्मिंग। So if the panel want to select one or two, they can select. But if you won't perform very well, if your group not perform very well, they will reject all of you, right? So you have to be very make sure. Sir, you're not audible again. Yeah, am I audible? Yes, no. So yeah, No, what I there am saying are lags in between. right now, am I audible or not? Can you please confirm? Okay. Yes, sir, you are audible. Yes, sir. Yeah. No, actually, I just tabbed on a mute, so I got mute.
So yeah, okay, guys. So let's continue with pointer. Yeah, so you have to be very hygiene with all these things. Okay, and yeah, let's come directly to your feedback part. Started with Avinash. Avinash, you have started. Directly come to a conclusion that should not tax more. They might impact business. Although the topic is the same, it is kind of a conclusion given to you. You have to discuss the conclusion, right? It is not a conclusion, even though it is question mark, and you can't able to conclude. If someone is trying to give a final answer, no, this is wrong, this is right. So the both party here in this case may be going to be wrong because you even कहीं पे टैक्स जरूरी है कहीं पे जरूरी नहीं है राइट सो बाकी चलो अविनाश पॉइंट इज वेरी गुड you started with a good pointer you took a long time but okay whenever you are starting a time is concerned like 8 may to all guys have you have to think about a group at least take a 30 second and let others to Okay. at their point so that you also have ample amount of time to come up next again right and what Okay, sir. happened because of you some of are not one or two are not able to speak or add any pointer Okay. तो थोड़ा माइंडफुल रहना थोड़ा टाइमर का देखते रहना pointer is good Okay. you have mentioned about should not tax more and Yeah. they might impact the business because they find log like you are taxing more so क्यों यहाँ पे business Mm. invest करना Yeah, exactly. especially Uh, GST hurt me yeah. And should I have spoken less? no you should mention a pointer your pointer is valid your pointer is good but what happened you had added a 2 to 3 pointer in a single go Yeah. right similar case for Shubham, you speak too long. Like you are more than like 1 minute. You have continuously speaking. So that is something I found you have to give a chance to others. Okay, let's come to you. Just wait for Okay. one more participant. Gautam. Sir, I have one question. Yeah, I will Why answer does all the it? questions. Let me first Yeah. give a Okay. feedback. मैं भूल जाऊंगा Okay. मैंने Okay. क्या सोचा था क्या था उसमें Okay. इधर. All right. Although I have written something, but वो भूल जाऊंगा मैं. Gautam, here your point is very good. You have mentioned about the people are found as loopholes, especially those who are well knowledgeable and those who have a good knowledge of all this stuffs, टैक्स वैक्स का जिसको Yes, अच्छा sir. खासा नॉलेज है ये चीज आपने मेंशन किया बट आपको यहाँ पे थोड़ा ग्राउंड आपने जहाँ छोड़ा था ना बाकी लोग उसे पकड़ नहीं पाए दिस इज व्हाट आई वुड से हियर इज अ Okay. पॉइंट यू शुड डिस्कस मोर अबाउट कि व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज क्वेश्चन ये था ना कि शुड टैक्स मोर ठीक है तो वही Yes, sir. क्वेश्चन रेज क्यों हो रहा है हैव यू थिंक ऑफ इट ये क्वेश्चन रेज क्यों हो रहा है ये कहीं पे डिस्कस नहीं हुआ थ्रू आउट जीडी व्हाई दिस क्वेश्चन आर बीइंग रेज्ड तो ये एक चीज आप पॉइंटर आप इस पर डिस्कशन हो सकता था क्वेश्चन ही रेज क्यों हुआ ये एंड द सिमिलरली आपको व्हेन यू गो अहेड एंड ये यू शुड मेंशन अबाउट ऑल दिस पॉइंटर जो महक ने बोला है अब यहाँ महक की एंट्री होनी चाहिए थी Okay. महक why these are like आपने यहाँ पे भले ही आपने वो आंसर नहीं किया why it is discussing but you have given a pointers कि what are the loopholes they have found they using this kind of thing like companies big firms they are using a CSR and other thing stuffs okay to add more value also and they are saving and someone is mentioned about charity and everything and यहाँ पे किसी ने तो कुछ बोल दिया था आई एम नॉट श्योर किसने कहा था कि वो खुद का ही कुछ करते हैं चैरिटी भी खुद का फिर पैसे तो बच ही जाता है किसने कैसे किसने बोला था आई रिमेम्बर So समथिंग I समवन said that they own their I own think forest and Karan. everything, and so they don't have to. यस तो I spoke something like that. लेकिन ये थोड़ा सा मतलब कंट्रोवर्शियल हो जाएगा इफ यू मे मेंशन you can mention in another way like don't say they own although everyone knows they own Ah, but yeah this is a loophole although this is a loophole yes. now Shubham your pointer this is for you I'm not sure you have performed earlier also in the GD or not please don't name No, any this was my person first time. although you don't know this is the first GD Okay. okay Okay. so Okay. although you guys Yes. don't know that time who is the person whose name is what but please don't name any one of them. Okay, just simply say as my I have different point of view. You can even don't Okay. say I disagree with him. Okay, I disagree with this black coat वाला. ऐसा Okay. मत बोल देना किसी को. ठीक है.
सो बी माइंडफुल, वो आपको नहीं करना। आपको वहाँ पे अगर आप डिसएग्री कर रहे हो, यू शुड सिंपली से आई हैव सम डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, राइट? बिकॉज हियर you are agreeing with other person and disagreeing with other one, Okay. but you can't say like this. It is not a even the right choice. Sometimes it happen, you the panel found you are not on the right track, like, और कुछ हो सकता है, मान लो कोई किसी का प्रो हो, ठीक है, किसी का कोई किसी गवर्नमेंट का प्रो हो जाए, कोई किसी गवर्नमेंट का नहीं हो, क्या पता आपके सामने कौन पैनल बैठा है। तो यू शुड सिंपली से आई हैव सम डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू एंड देन कंटिन्यू विथ योर पॉइंटर्स। पॉइंटर आपके अच्छे थे। आपने कोई आपने एक कंट्री का भी नाम लिया था। आई एम नॉट एबल टू रिमेम्बर द नेम, क्या था उसका नाम? यू आर नॉट ऑडिबल। Luxembourg था उसका नाम, and that was a very good point. यस, Yeah, that's वो जो actually पॉइंटर a था ना, really good दैट इज example. समथिंग लाइक अमेजिंग वन। वो इसमें नाम याद नहीं, मैंने लिखा, बट पॉइंटर ही इज मेंशन ऑफ कंट्री, वो ग्रो कर रही है। एंड he also mentioned कि it not kills competitions although, and so it is one of the reason जिससे उसने गौरव को अग्री किया था एंड डिसएग्री विद अविनाश, समथिंग लाइक दिस ही मेंशन। ये नहीं करना था सिर्फ। पॉइंटर पूरे बात बहुत अच्छे थे। द पॉइंटर्स फॉर मार्क्स इफ यू से, हाईएस्ट मार्क मैं उसे दूंगा इस केस में। सेकंड, महक की एंट्री गलत हुई है, इसलिए पॉइंटर्स नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर महक पहले एंट्री करता थोड़ा उसे एक लेवरेज मिल जाता कि सेकंड स्पॉट पे आता वो। नाउ अभिजीत, अभिजीत, Yes, 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 you have mentioned about government should expand tax bases and should, like, जैसा आपने किया था, मेंशन किया था, yes, एंड tax इनिशियली आपका slabs. पॉइंट ऑफ व्यू अलग था, राइट? मैं वो आई थिंक शुभम था, उनका पॉइंट आगे लेके जा रहा था, लाइक somewhere he हम्म। was talking about slabs, so I captured it. ओके, तो ये जो पॉइंटर था यहाँ पे आपने सही बोला था, लेकिन आपने सॉल्यूशन कैसे दिया नहीं आपने अच्छे से, थोड़ा और आप उसे इलेबोरेट कर सकते थे। ये बहुत छोटा आपका Yes, एंट्री भी था, और yes, आपने yes, जो पॉइंट्स बोला फिर आपने एक हिंट दिया कि दिस इज व्हाट समथिंग वी डिस्कस, बट थोड़ा आपको और उसे हल्का से elaborate, मैं नहीं कह रहा बहुत ज्यादा इलेबोरेट करना है, यू हैव टू इलेबोरेट लिटिल बिट, क्योंकि वहां पे yes. मुझे समझ में नहीं आएगा एग्जैक्टली आप क्या कहना चाह रहे हो। एक्सपांड टैक्स बेस मींस व्हाट? यू शुड गिव एन एग्जांपल, राइट? Okay, okay. देन Ruhin have mentioned about a proportion being taxed not fair for working professional. Here is something, this is where the controversy will start. You are saying some proportion being taxed, okay, but it's not fair for working professionals, क्योंकि वर्किंग प्रोफेशनल कमा रहे हैं तो वो तो यार मेहनत करके कमा रहे हैं, बाकी जो कंपनीज है उन्हें टैक्स करो थोड़ा, लाइक दिस, राइट? बिकॉज यू, it sounds like this, okay? So you have to be very mindful if you are saying, don't say any controversial thing. How you can say this is not biased to anyone? It is again biased. Actually, I wanted to say the proportion of income that they are being taxed, like working professional, all income, they are being taxed by their company only. And in case of businesses and wealthy professionals, sometimes they show losses and all. Because of that, the income that they are being taxed, proportion of their income, is not the true income that they are having. So that's what I wanted to say. या सो जो भी था, यहाँ देखो एक चीज है, प्रपोर्शन ऑफ जो टैक्स आप बोल भी रहे हो, ठीक है, ये मुझे उस समय क्लियर नहीं आया, तो आई गेस आप ये कहना चाह रहे हो या फिर मैं कुछ मिस कर गया, वॉट एवर, बट थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल था मुझे, जो वो पॉइंट नहीं लगा। नॉट फेयर फॉर वर्किंग प्रोफेशनल, दिस इज समथिंग व्हाट यू हैव मेंशन, सी, and someone is also discussed the same thing. Gautam, I guess, above the threshold can be taxed more. Yes, sir. Although, as per our current rule, there is some kind of limit. थ्रेशोल्ड क्रॉस होने के बाद आपका टैक्स ऐसे ही मोर ही होता है, लेकिन वो है वो Mhm. ओवरऑल टैक्स लगता है, वो अलग बात है। तो रूल तो ऑलरेडी है, तो ये तो ऑलरेडी है। आप मतलब आप ये पॉइंट कहना क्या चाहते थे? देयर इज अ रूल यू आर मेंशनिंग, और यू, नो सर, आई वांटेड टू से कि जैसे अभी 40% टैक्स स्लैब है, तो सर ऐसे वो सिर्फ मतलब वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए है। उससे आगे भी अगर वो लेट्स से कोई पर्सन की इनकम 500 करोड़ से उससे ज्यादा है, तो उसके लिए एक नया टैक्स स्लैब इंट्रोड्यूस कराना। आई वांटेड टू से समथिंग लाइक दिस। ओके, सो टैक्स स्लैब इन व्हाट केस? आप उन्हें ज्यादा टैक्स चार्ज करने के लिए कह रहे हो या कम करने के लिए कह रहे हो? सर ज्यादा, ऑब्वियस ज्यादा, बिकॉज वो मतलब एक हाउ इट इज नॉर्मल लेमैन फेयर से। देन? सर दैट वाज एक्चुअली माय पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज वो लेमैन से बहुत ज्यादा अर्न कर रहे हैं ना, तो दैट शुड बी यूज्ड इन समवन्स, यू नो,
their welfare. ओके, सो या दैट्स इट। सो देखो ये जो है ना, ये था अरुहिन, जस्ट वेट, the session will not going to start once this will end, don't worry. So basically the pointers you have mentioned, threshold threshold वाला जो था वहाँ पे एक ambiguity भी था, किसने पॉइंट आउट नहीं किया, बट इफ आई वाज इन द जीडी आई could point out that you have mentioning about this, but what are the implications? And because someone is earning more, it doesn't mean you have to charge them more. Okay. There should be all of the people have a one fixed slab and they should pay for this slab. Okay, although even though अगर आप उनका चार्ज ऐसे भी कर रहे हो, ठीक है, अगर आप 100 crore पे 10% भी चार्ज कर रहे हो तो ही इज पेइंग 10 lakh, which is anyways more than the other people who has earning a 10,000 and paying a tax of 100 rupees or maybe 1,000 rupees, right? 10% 1,000 हो जाएगा। तो थोड़ा सा ये था, बट ये अभी भी कंट्रोवर्शियल है, हाउ टू थिंक। पैसे ज्यादा आते तो ऐसा लगता है कभी कभी ज्यादा चार्ज क्यों हो रहा, दुख होता है बहुत। तो ना अविनाश, यू मेंशन अबाउट रूहीन है, ओके, रूहीन का पॉइंटर जो था, रूहीन आपका पॉइंटर जो था वो तो सही था जो मैंने कहा जैसे, बट वही था, उसमें मुझे भी क्लियर समझ के नहीं आया। आई हैव टू वॉच अगेन रिकॉर्डिंग सो दैट आई कैन गेट अगेन पॉइंटर, बट द वर्किंग प्रोफेशनल वाला पार्ट था ना, व्हाट आई गेट फ्रॉम देयर, जो गौतम ने कंटिन्यू किया है, एंड आई गेस गौतम भी गेट वही सोचा था गौतम ने भी, बिकॉज ऑफ द सेम ही मेंशन अबाउट द टैक्स स्लैब्स के ऐसे थ्रेशोल्ड होना चाहिए, राइट गौतम? यस सर, सो दैट वाज हाँ। जस्ट कोइंसिडेंट कि हमारे पॉइंट्स मैच हो गए थे। ओके, देन अविनाश, आपने इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से कहा कि यार इन्वेस्टर विल सी दिस इज अनफेयर, ओके, एंड बिकॉज ऑफ दैट ये भी हो सकता है कि हमें इकोनॉमिकली लॉस हो, दिस इज व्हाट यू हैव मेंशन, एंड दैट्स व्हाई वी हैव टू कीप इट सेम फॉर ऑल, दिस इज द गुड पॉइंटर। ये एक तो चीज था, बट देखो आप लोग ने ये तो बताया टैक्स अनफेयर है या नहीं, डिस्कशन तो हुआ, यहाँ पे कुछ कुछ सॉल्यूशंस भी, सॉल्यूशंस नहीं, आप लोग ने कुछ कुछ ऑप्शंस भी दिए हैं कि ऐसे ऐसे कर सकते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू सिर्फ दो लोग ने समझाया है, एक है शुभम ने, शुभम ने ही समझाया दोनों के थ्रू, दो बार शुभम आया, शुभम सेकंड टाइम ही केम एंड अगेन ही गिवन अ कंट्री एग्जांपल, कंट्री भूमि, ओके, सेम वन आई गेस, दो एग्जांपल दिया, फर्स्ट वन एक कंट्री के बारे में दिया था, ग्रो कर रहे जो नॉट ग्रोइंग, ओके, बिकॉज ऑफ द सेम एक्स वाई रीजन, सेकंड गिवन, दैट इज वेरी गुड पॉइंट, सेकंड वाज वेरी गुड, विच ही मेंशन, इवन दो ही मेंशन कि डेवलप्ड कंट्री अगर हो ना, तो एनीवेज वहाँ पे इन्वेस्टर्स आएंगे ही आएंगे, इट डजेंट मैटर कि आप कितना चार्ज कर रहे हो, दैट इज अ गुड पॉइंट आई वुड से, बट वहाँ भी लिमिटेशंस होते हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा चार्ज करोगे तो इन्वेस्टर विल ऑल्सो लुक फॉर अदर सेकंड बेस्ट ऑप्शंस, राइट? ऑल्दो देखो ये भी, ये सेम चीज़ आपका क्राइटेरिया फुलफिल करेगा आपके एक्चुअल जीडी में भी, भले ही आप बहुत बढ़िया पॉइंटर्स रख रहे हो, Okay. बट यू आर अग्रेसिव, यू आर नॉट कोऑपरेटिव, the panel will choose Okay. second best option, not you. ठीक I'll है? be careful next time. दे, अरे आपका पॉइंट अच्छा था, मैं बोल रहा हूँ आपका पॉइंटर अच्छा था, मैं आगे कंटिन्यू करा, इट्स माय पॉइंट ऑफ व्यू, ओके, व्हाट एग्जैक्टली द पीपल थिंक, इवन आप भी सोचो, आप क्या करोगे अगर आप इंडिया में ज़्यादा टैक्स कर रहे हो, यू विल मूव टू अब्रॉड फॉर जॉब्स एंड एवरीथिंग, यू विल ट्राई टू सेव योर टैक्स, यू विल ट्राई टू सेव योर मनी, राइट? सो दिस इज व्हाट So समथिंग, that's what I mentioned, sir. That यस, investors would move to a different country where there is less tax. यस, सो वो एक पॉइंट ऑफ व्यू कंसिडर करना था, गुड पॉइंटर कि आपने कंसिडर किया है वो, so that's the same thing will happen in your actual GD also. The panel will think you are already good, you have very good opportunity, you have इतना बढ़िया ब्राइट, मतलब ये है ब्राइट माइंड कि अगर आप वो एमबीए करने जाओगे तो एमबीए कॉलेज का नाम होगा, ठीक है, कि अविनाश मेरे पास एमबीए कर रहा है, गौतम मेरे से एमबीए, हमारे एमबीए कर रहा है, राइट? दिस इज हाउ द थिंग, बट इफ यू आर अग्रेसिव, यू आर नॉट कम अंदर समथिंग लाइक, आपको उसका कुछ बेनिफिट नहीं हो रहा कॉलेज को, आप बोल रहे मैं कॉलेज से जाऊंगा लेकिन कुछ कर नहीं रहा, नाम तो मैं कर दूंगा लेकिन मैं अपना ही करूंगा, ठीक है, मैं आपकी बातें नहीं मानने वाला हूँ, सो वाई दे विल गिव यू अपॉर्चुनिटी, राइट? तो एक पॉइंटर ये था, तो सेम लॉजिक यहाँ भी फॉलो होता है व्हेन इट कम टू इकोनॉमिक, बिजनेस स्पेशली, पैसे की बात होती तो भाई होता ही है, मैं बहुत ज़्यादा करता हूँ। अभिजीत अगेन यू केम, यू स्टार्टेड एडिंग योर पॉइंटर्स, वहीं पे करण ही केम अप एंड ही सेड ओह बस बस हो गया, रुक जाओ, इट्स अ टाइम टू कंक्लूड, एंड ही गिवन अ कंक्लूजन,
आई गेस कुछ आपने एक पॉइंटर अपने साइड से ऐड किया था, आई एम नॉट श्योर क्या किया था, बट मैंने लिखा है एक पॉइंटर आपने कुछ ऐड किया. Whenever you're concluding, please summarize all this thing whatever they have mentioned. Don't add any pointer at the end. Okay. Yes, So conclusion में आप वो चीज़ नहीं करना चाहिए. okay. Please keep it in the mind और ये चीज़ follow कर लो आप लोग. And अब ये होने के बाद महक आपकी एंट्री थी. The pointer is very good. मतलब बढ़िया था, मैं खुद सुन रहा था, मैं इससे कुछ नहीं इंटरप्ट नहीं किया, ऑल्दो आई वांट टू इंटरप्ट, बट योर पॉइंटर इज गुड. यू हैड अ वैलिड एग्जांपल, अपने सीएसआर इवेंट्स से सबके बारे में कंपनी का पर्सपेक्टिव रखना चालू किया, जो कि पहले उतने डिटेल में नहीं रखा गया था, किसी ने रखा नहीं था, राइट. तो अच्छा एग्जाम्पल था, वो कंटिन्यू होता गौतम के एंट्री के बाद. सो इट विल लुक लाइक ओ इट इज अ गुड जीडी. यू ऑल आर फॉलोइंग योर डिस्कसिंग इन अ गुड मैनर. आप एक दूसरे का पॉइंटर्स भी ले रहे हो, उससे कुछ आगे भी पॉइंट कर रहे हो. मतलब एक काइंड ऑफ जीई भी बोल सकते हो. जीई और जीडी थोड़ा सिमिलर ही है, नाम अलग अलग है, ठीक है. ऑल्दो जीई बहुत ज़्यादा अलग होता है, उसमें बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं. डेफिनेटली वी आर गोइंग टू कंडक्ट जीई ऑल्सो, सो यू गाइस कैन पार्टिसिपेट देयर. सो दिस इज समथिंग यू हैव टू बी माइंडफुल. फर्स्ट, हाइजीन जो भी है आपका, हाइजीन फैक्टर जो मैंने कहा, यू हैव टू बी प्रॉपर सिटिंग एंड एवरीथिंग. यू हैव टू बी काम एंड कंपोजर. Don't show more excitement, don't show more nervousness, right? Whenever you're going to add a pointer, make sure don't take a long timer. ज़्यादा मतलब 30 seconds, 45 seconds is max. Okay, try to get more entries. It is not like in a one entry you have to conclude everything, you have to say everything एक बार में बोल दिया हुआ खत्म. No, you should take 1 or 2 entries. Third pointers, third pointer is basically listen carefully what exactly happening. GD got ended, GD got concluded, but some of you are not aware, even महक तो नहीं था, ठीक है. You should be a very attentive throughout your actual GD, right? Because the panelist not going to ask you question, but when you are sit for interview, interviewer is if the panelist and interview both are same, they might ask you who are in the GD, whom you is going to select, what are the pointer you should discuss more, want to discuss more. Okay, what do you find as negative pointer, एंड विच पॉइंटर विल गोइंग टू मेक अ लॉस टू एक्स वाई जी, राइट. या फिर एक इकोनॉमी की लॉस की बात कर लो, कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है. सो यू हैव टू बी वेरी अटेंटिव थ्रू आउट द जीडी, ठीक है. दिस इज द समथिंग सम अप ऑफ द जीडी. ऑल्दो उतना डिटेल नहीं था, और ज़्यादा पार्टिसिपेंट होते, टाइम में थोड़ा ज़्यादा रहता तो और डिटेल अच्छा जीडी हो सकता था. बट नो वरीज, वी आर गोइंग टू कंडक्ट मोर जीडीज, वहाँ पे फिर डिस्कस करेंगे. नाउ लेट्स कम टू अ Q&A पार्ट. आपका जो भी क्वेश्चन है आप पूछ लो, मैं आंसर कर दूंगा. सर मेरा एक क्वेश्चन है, व्हाई डज इट ऑलवेज डिपेंड ऑन द ग्रुप? कि मतलब अगर एक इंडिविजुअल अच्छे से परफॉर्म करता है तो मतलब ग्रुप की वजह से उसको रिजेक्ट कर देंगे, ऐसा होता है? एक्सेप्शनल केसेस में उसे भी सेलेक्ट कर सकते हैं, ऐसा मैंने नहीं कहा कि नहीं करेंगे. देर आर सम एक्सेप्शंस, बट 90% चांसेस है ना कि आपका पूरा जीडी ही खराब हुआ अगर मुझे समझ में ही नहीं आया कि आप लोग ने क्या डिस्कस किया है. ऑल्दो हो सकता है आपने आके बहुत अच्छे पॉइंटर्स रखे हो, बट बाकी के जो 9 मेंबर है पैनल में, या फिर 8 मेंबर, जो भी इतने नंबर मेंबर है आपके अलावा, उन्होंने ऐसा जीडी कर दिया था कि मुझे हमें समझ में ही नहीं आया कि हुआ क्या है ये. ओके. हाउ कैन दे डिसाइड, समझ रहे हो. हम तो ओके. ठीक है, हम तो यहाँ पे पॉइंटर्स बना रहे, दे ऑल्सो मे बी दे राइट सम पॉइंटर्स. क्या कह रहे हो क्या नहीं, कुछ तो लिखते ही है वो, मेरे पीछे ही बैठ के लिख रहे थे. व्हेन आई वाज, जब रिजेक्ट हुआ था ना, वो पहला जीडी था, एक ही जीडी उस टाइम रिजेक्ट किया उन्होंने, बहुत दुख हुआ था. आफ्टर दैट जीडी में रिजेक्ट नहीं हुआ उसमें, लेट इट बी. सो दैट्स द थिंग. अगर आप वहाँ कर रहे हो ना, आपको बड़ा माइंडफुल होना है. आपको नहीं पता बाकी लोग कैसे है, बट आप खुद को कंपोज रखो, एंड बस हाँ अपना बेस्ट कर सकते हो. यू डोंट हैव आइडिया अबाउट अदर्स. एंड मोस्ट ऑफ द केसेस, बिकॉज इन दिस डेज अब जो है जीडीज बहुत सारे लाइव होने लगे, इवन प्रेप भी इतने सारे जीडीज करवा चुके हैं लास्ट पास्ट 3 years में. सो बहुत सारे जीडीज ऑनलाइन अवेलेबल है, जो कि अदर प्लेटफॉर्म्स पे ऑल्दो पहले नहीं थे, अभी होंगे. तो वो चीज़ जो है एक माइंडसेट सेट कर दी कि हाँ इस तरह से चीज़ फॉलो करना, दिस आर द हाइजीन फैक्टर्स विच वी हैव टू टेक केयर थ्रू आउट द जीडी. तो सब लोग थोड़ा बेटर परफॉर्म करते हैं. यू कैन से योर सेल्फ, यू गाइज आर ऑल्सो परफॉर्मिंग वेरी वेल, राइट. तो 2 या 3 जीडी आपने ही प्रैक्टिस के वो भी करके आएंगे कहीं से, दे विल परफॉर्म वेल. बट यस, यू हैव टू बी कीप दैट दोज एक्सेप्शंस. कुछ लोग हो सकते हैं जो बहुत ज़्यादा जीडी खराब करने की कोशिश करें, वो डायरेक्ट रिजेक्ट होंगे, डोंट वरी. वहाँ इंटरप्ट मत करना. अगर कोई बहुत ज़्यादा बोल रहा है ना अग्रेसिव होके, प्लीज डोंट इंटरप्ट इन बिटवीन. जहाँ रुक जाए उसके बाद कंटिन्यू करना अपना पॉइंटर.
ओके सर। ठीक है। सर जैसे रोहिन ने एक पॉइंट बोला था एंड आई कंटिन्यूड आफ्टर दैट, सर बाय कोइंसिडेंट हमारे पॉइंट सेम थे या फिर एक फॉलो अप था, तो इससे पैनलिस्ट को कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं लगेगा मुझ पे कि आई एम जस्ट फॉलोइंग हर लीड एंड एनीथिंग लाइक दैट? नो नो नो, इट शोज लाइक यू आर अवेयर व्हाट वी आर डिस्कसिंग। आप हर बार कुछ नया पॉइंटर नहीं बोल रहे हो, राइट? डिस्कशन जो हो रहा है उस टॉपिक के अराउंड ही आप बात कर रहे हो, तो अवेयरनेस शो होता है वो, राइट? तो उसमें कोई नेगेटिव नहीं, मैं आपको ये कह रहा हूँ अच्छा पॉइंटर था वो। बट वही ओके ये जो पॉइंटर था ना वो नॉट फेयर फॉर वर्किंग प्रोफेशनल वाला, देन यू हैव मेंशन अबाउट थ्रेशोल्ड अबो एंड समथिंग दैट शुड बी चार्ज मोर थ्रेशोल्ड, ऐसा कुछ रहना चाहिए, तो वो तो ऑलरेडी है, अभी भी है। ओके ठीक है, बट समझ। वो 5 करोड़ वाला पॉइंटर वो थोड़ा ज्यादा हो गया। अगर मान लो कि इतना कमा रहा है तो क्यों भाई, क्यों ऐसे पैसे लूट रहे हो तुम, ऐसे क्यों कर रहे हो? मतलब मैं खुद का सोच ओके के बता रहा हूँ फ्यूचर। ठीक है, तो दैट्स इट। बट वो उसका कोई इशू नहीं है, आई डोंट वरी अबाउट दैट। शुभम का पॉइंटर्स पॉइंटर्स आर गुड। शुभम बहुत बढ़िया पॉइंटर्स आपने बोला है, बट द थिंग इज इट इज वेरी लॉन्ग, so make sure next time whenever you're going to add a pointers, uh, keep it short, take a 2 3 entries, okay, in a GD. So that's what you can do, right? Sir, any Anything else comments और on कोई डाउट है? You are on mute, Shubham. sir? Okay, Any sorry, comments I was on not aware. Thank you. Yeah. Done. hello? Sir, Yeah, any Mehak. comments on me? Comments for you is be attentive. Once the GD concluded, please don't add a pointer, and take a chance to participate in between a GD, in between a timer. There are lots of places where the people are not even speaking. There is lots of pauses, and you can get an entry that time. You have started Yes, sir. speaking once the conclusion ended, right? So be mindful with this. Apart from this, the pointers are good. Even you can participate more GD, you will get all this thing. You will get a hygiene factor. So yeah, just a participant. Start participating more and more. That is what you can do. Ifa, please take a entry. Next time, whenever you're going to participate in the GD, try to enter, because चुप रहने से कुछ नहीं होगा, ठीक है? Yeah, this was my first ever GD and I think I got a bit nervous, so I'll कोई try. बात Sir, I नहीं, have a होता है, कोई question. बात नहीं, बट नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखना, ठीक है? Hello, sir. या महक, प्लीज Sir, कंटिन्यू। I have a question. Sir, what a panelist to see a behavioral insights about a candidate in the GD? What a behavioral There are insights? lots of things they will see, like your awareness, how you are aware about a topic or not, right? Then they will see your like how you are fit for the MBA or not, right? You are able to understand others' pointers or not. You are able to get their pointers and add your pointers also. Your pointers are adding value or not, right? All these things, बहुत सारी चीजें हैं, मतलब ऐसा एक चीज क्या बोलूं मैं। आप हर GD में कुछ नया आपको मिल जाएगा, right? Okay, so yeah, guys, this is the end of the GD, and we are also going to conduct more GDs in coming days. Those are watching this live and want to participate, simply check a description and join our group, or you can simply enroll from our website prepbee.in/trial. You will get all this thing there. Participate in the GDs, free GDs at least. पेड में हो तो अच्छी बात है यार, पैसे दे रहे हो, थैंक यू वेरी मच। ओके, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द Thank you. बेस्ट।